Good morning, students. Today we are going to study about obtaining a gene product. Now let us see the topic. Now, insertion of recombinant DNA and obtaining the foreign gene product. See, the DNA which was obtained from the organism, the desired DNA, that was inserted in the vector. Now, after the vector was prepared, now it was important to introduce this vector in a host organism. Now that host organism can be a bacteria, it can be a yeast, but care has to be taken that the DNA, the desired DNA which has been incorporated in the vector gets expressed inside the host. Now, if that particular DNA is expressed, I mean to say that RNA will be formed, and from that RNA protein will be formed. Now this is our interest. See, that particular protein can be an important enzyme, that particular protein can be important hormone. That is our interest. So it is very important to purify the things and obtain that particular desired product as such. So now let us first of all talk about transformation, which is written over here. You can see on the screen. Plasmid and the foreign DNA are cleaved with the help of restriction endonuclease enzyme. We use DNA ligase to insert the DNA into the vector. Vector is introduced into the host. For example, E. coli. Now it is, as you can see on the screen as such. ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट. अब क्या होता है, जब ऑलरेडी आपका डिजायर्ड डीएनए अलोंग विद द वेक्टर अंदर पहुंच गया है तब वो एक्सप्रेस होगा, और एक्सप्रेस होगा तो बट नेचुरल प्रोटीन बनाएगा. तो वेक्टर डीएनए जो ऑल प्रेजेंट है उसके, और डिजायर्ड डीएनए उसके अंदर आपका प्रेजेंट है, तो वेक्टर डीएनए भी तो एक्सप्रेस होगा और क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा. इसका मतलब वेक्टर डीएनए का भी प्रोटीन होगा, उसके साथ अटैच आपका जो डिजायर्ड डीएनए वो भी प्रोटीन बना रहा है. इस तरह के प्रोटीन को हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन. ये देखिए नीचे दिया हुआ है, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन. ओके, नाउ द रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन हैज टू बी प्यूरिफाइड, बट बिफोर दैट लेट अस डिस्कस द ऑर्गेनिज्म in which the desired DNA vector has been introduced. Now this organism is allowed to multiply in very large number, and that takes place inside a bioreactor. We have two different types of bioreactor. See, as you can see on the screen, this is simple stir tank bioreactor, simple stir tank bioreactor, and here you see this is sparged stir tank bioreactor, stirred tank bioreactor. Now bioreactors are basically vessels made up of steel having a volume of about 100 liters to 1000 liters. So they are prepared for economical purpose. In a bioreactor, medium is prepared and kept. Along with that, culture of bacteria is also placed in the bioreactor, and these bacteria are allowed to grow in huge number. Obviously, these microorganism contains the desired DNA, which are expressed to form a desired protein in form of vaccine, antibiotics or other pharmaceutical products. So bioreactors को जो डिज़ाइन है वो इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि उसमें अगर आप कोई चीज़ प्लेस कर रहे हैं, बैक्टीरिया प्लेस कर रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लेस कर रहे हैं, तो वो उसका रेप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन बहुत फास्ट हो. और वो मीडियम जो बायोरिएक्टर्स में प्रेजेंट होता है, वो मीडियम भी इस हिसाब से प्रिपेयर किया जाता है वो सपोर्ट करे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को. फॉर एग्जांपल उसमें विटामिन्स प्रेजेंट होते हैं मीडियम में, सुक्रोज प्रेजेंट होता है, इंपॉर्टेंट अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, ग्रोथ हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं.
ताकि पर्टिकुलर जो सेल है, अब वो सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है, इन सर्टेन केसेस प्लांट सेल भी होता है, एनिमल सेल भी होता है। जिस तरह का सेल है उसकी ग्रोथ को देखते हुए मीडियम वहाँ प्लेस किया जाता है। नाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि मीडियम जो है वो उस तरह का हो जो सेल्स की ग्रोथ को सपोर्ट कर सके। साथ ही साथ बायोरिएक्टर्स वेसल्स में आप देखो एसिड बेस पीएच कंट्रोल सिस्टम भी प्रेजेंट होता है, ताकि वो एसिडिटी या बेसिसिटी जिस तरह का पीएच चाहिए उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ में यूज़फुल हो, चाहे प्लांट सेल की ग्रोथ में यूज़फुल हो, चाहे एनिमल सेल की ग्रोथ में यूज़फुल हो, जो पीएच रिक्वायर्ड है वो वहाँ प्रेजेंट हो और उसको वो कंट्रोल कर सकता हो। ठीक उसी तरह से यहाँ पे और भी सिस्टम है, जैसे फोम ब्रेकर प्रेजेंट होता है सो दैट द ऑर्गेनिज्म कैन मल्टीप्लाई इन ह्यूज अमाउंट। ये देखिए फ्लैट ब्लेडेड इम्पेलर्स भी प्रेजेंट हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं बायोरिएक्टर्स में। बायोरिएक्टर्स में मीडियम के अंदर विटामिन भी प्रेजेंट होते हैं, ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम भी प्रेजेंट होता है। साथ ही साथ थोड़ा बहुत अमाउंट में आप मीडियम को निकाल के टेस्ट भी कर सकते हैं। ये टेस्ट में देख सकते हैं कि जो ग्रोथ हो रही है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वो प्रॉपर हो रही है कि नहीं हो रही है। नाउ लेट अस look at sparse stirred tank bioreactor in which the air bubbles are pressed so that the bubbles dramatically increase the oxygen transfer area. So here you can see, so this is far superior than simple stirred tank bioreactors. बायोरिएक्टर सिर्फ एक वेसल है जिससे जो आप भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या प्लांट्स या एनिमल सेल्स में डाल रहे हैं उसकी ग्रोथ को बढ़ा सके। तो ये सारे सिस्टम इसमें फिट होते हैं ताकि ये एसिड बेस यानी कि पीएच को कंट्रोल कर सके। और स्टीम, इसमें स्टीम सिस्टम होता है फॉर स्टेरिलाइजेशन पर्पस। फ्लैट ब्लेडेड इम्पेलर्स होते हैं ताकि जो मीडियम है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सके प्रॉपरली। ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम भी होता है ताकि सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन मिल सके फॉर देयर प्रॉपर ग्रोथ। नाउ लेट अस टॉक अबाउट डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। नाउ आफ्टर completion of the biosynthetic product, the product has to be subjected to different kind of processing for making it as a finished product. Now this includes separation and purification methods. Now the product has to be formulated with suitable preservatives. Suitable preservatives डालना उसमें ज़रूरी होता है। साथ ही साथ it has to be kept in mind that if suppose the product is a drug, proper clinical trial should be used. And if suppose that is a drug which is used for certain heart disease or lungs disease, then the trial method is very rigorous. Now let us talk about homework assignment. How insertion of recombinant DNA into host is done. So I have already told you about recombinant DNA technology. It is very easy. Recombinant protein is a protein which is derived from the vector DNA along with the DNA which has been inserted inside the vector. So what are bioreactors? These are kind of vessels having a size of 100 liters to 1000 liters in which the microorganisms can be kept and can be grown in a huge amount for economical purpose. Thank you. Have a nice day.